Hello everyone. Today I am here to discuss about the beautiful poem The Tiger and the Deer, the most famous poem in Indian English literature written by Sri Aurobindo, a Bengali Indian writer and most famous and prominent figure in Indian English literature. Is broad his poetry is broad and broad, but he's not just a famous poet, but also a great dramatist, short story writer, and a famous philosopher. Sri Aurobindo's poetry can be divided into two groups: the poetry of action and poetry of meditation. His poetry has a charming effect of nature, as Wordsworth means. Aurobindo presented nature in his poetry. Nature has a charming effect in his lines, in his writings, and here means like Wordsworth, as Wordsworth wrote about nature. Aurobindo wrote his famous work Savitri. There, Savitri is an epic written by Sri Aurobindo, and it is his marked work. Savitri is his marked work. Aurobindo wrote a short poem, The Tiger and the Deer. The poem is a distinction between upper class and a comparison between upper class and lower class, a comparison between life and death, comparison between good and evil, innocence and experience, means such as he has presented. Aurobindo has presented the situation or present condition, means condition of that time, of his time, condition of society of his time, means how powerful are ruling the poor, how poor are deprived from their own basic needs, from their basic rights, how. But he also concludes in the end of the poem that this is not permanent. This will be fade away. All the power can be fade away. All the power will be fade away, and once the poor will also get their rights. According to the poem was written in 1930 but was revised again in 1942. Some writers also say that the poem is compared to the poem also present the condition of freedom, means how British are ruling the Indians, the innocent Indians, how experienced British are ruling the innocent Indians, and in the end he concludes that once they will be gone, and all the rights will be all the powers will be in the hands of Indians. As he says in the as he means, as we will discuss the poem, as we will study and discuss about the poem, we will get all the topics clear by discussing the poem. So let's move towards the poem. It's a short poem. As I had told you before, that the poem, it's a short poem written in 1930, also revised in 1942, written by Sri Aurobindo, a Bengali Indian writer, most famous figure of Indian English literature. The poem presents the contrast between good and evil. The poem. So let's start the poem. As I always say, that for memorizing or analyzing a poem in a perfect manner, we should have a perfect command over the text of the poem. So first we see the text of the poem, The Tiger and the Deer. Let's move toward the text of the poem. The text of the poem is like brilliant, crouching, slouching, what crept through the green heart of the forest, gleaming eyes and mighty chest and soft, soundless paws and grandeur or murder. The great beast crouched and crept and crouched a last time, noiseless, fatal. Destroyed the mild, harmless beauty by the strong, cruel beauty in nature. The mighty perish in their might, the slain survive the slayer. So that's all. That's the text of the poem. It's a short poem, not so long.
That was the text of the poem. We should have a complete command over the text of the poem. Let's analyze the poem verse. Let's explain the poem. So start. The poem begins with so let's explain the poem in simple words. चले मीन्स वो श्री औरबिंदो ये पोएम के बारे में क्या, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि वो पोएम के मीन्स क्या, मेन टॉपिक्स, मेन थीम्स, उसने क्या, उसका मेन पॉइंट क्या रखा है। उसका मेन पॉइंट ही उसने यही रखा है कि उसने एक डिस्टिंक्शन दिखाया, एक चीज़ दिखाई, अपनी सोसाइटी की कंडीशन दिखाई है कि किस तरह से जो रूलर्स हैं मीन्स पुअर्स के, किस तरह से पावरफुल जो लोग हैं, जो पावर्स में है लोग, वो किस तरह से पुअर्स के हकूक़ को मीन्स हक को, उनके हक को मार रहे हैं, किस तरह डिस्टिंक्शन बताई है, किस तरह से मीन्स ये इसमें लाइफ डेथ मतलब कंपैरिजन, डार्क एंड मीन डिफरेंस मीन्स कंपैरिजन दिखाया है कि मीन्स लाइफ और डेथ का है, इनोसेंस और एक्सपीरियंस का है, कंट्रास्ट है, उनके गुड और एविल का कंट्रास्ट है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको मीन्स आज़ादी से भी कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरह से वो बताता है कि किस तरह से मीन्स जो ब्रिटिश हैं वो इंडियन लैंड को वो मीन्स ऑक्यूपाई किया हुआ है, किस तरह से वहाँ वो रूल कर रहे हैं, लेकिन वो एंड पे वो विजय भी बताता है कि एक दिन उनका चला जाना है, उन्होंने चला जाना है और सारे रूल्स सारा कुछ इंडियंस के हाथ में ही रहना है। यहाँ पे उसने टाइगर को एक जो है वो टाइगर को एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और ड्राउन फिगर के तौर पर प्रेजेंट किया है, और डीर को जो उसने एक इनोसेंट फिगर के तौर पर प्रेजेंट किया है। टाइगर मीन्स एविल और डीर को गुड के तौर पर प्रेजेंट किया है। एक कंपैरिजन सारा दिखाया है। चूँकि पोएम रिवाइज की गई है 1942 में अगेन, तो इसको फ्रीडम के साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही कुछ है, लेकिन मीन्स कंपैरिजन तो है ही। तो पोएम स्टार्ट किस चीज़ से थे? स्टार्ट में वो एक टाइगर के ब्यूटीफुल इमेज पे प्रेजेंट करता है कि किस तरह से मीन्स उसके कितनी खूबसूरती, उसकी पावर को सारा बयान करता है। ब्रिलियंट क्राउचिंग स्लाउचिंग व्हाट क्रेप्ट थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, मीन्स उसके एक अच्छा सा फिगर प्रेजेंट करके किस तरह से वो ग्रीन फॉरेस्ट के दरमियान से चलता हुआ आ रहा है। उसके माइटी चेस्ट को मीन्स कर रहा है, उसके सॉफ्ट साउंडलेस पास को मीन्स जब टाइगर चलता है तो उसके सॉफ्ट, उसके जो पंजे हैं पास उस मीन्स सॉफ्ट हैं कि उसके चलने से उनको कुछ आवाज़ नहीं आ रही, कुछ आवाज़ भी पैदा नहीं हो रही। मीन्स जो हिरन, बेचारा मासूम हिरन पानी पी रहा है पूल से, उसे फील ही नहीं हो रहा कि मीन्स टाइगर आ रहा है। वो टाइगर के एक माइटी फिगर को प्रेजेंट करता है, एक फिजिकल फिगर उसकी टाइगर की, ग्लेमिंग आइज, माइटी चेस्ट, सॉफ्ट साउंडलेस पास, मीन्स उसके एक अच्छी सी फिगर किस तरह से वो बग़ैर आवाज़ के किस तरह से ग्रीन फॉरेस्ट में से आ रहा है, एक इनोसेंट हिरन की तरफ, इनोसेंट डीर की तरफ जो मासूमियत से पानी पी रहा है, जो इस सब से इस हर चीज़ से नवाकिफ़ है, जिसे कुछ आइडिया ही नहीं है कि मीन्स टाइगर आ रहा है उसकी तरफ, वो अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग मीन्स टाइगर से एक खौफ खाते हैं क्योंकि एक डेंजरस फिगर है ना उसकी, मीन्स ड्राउनी, उसको एक डेथ के सिंबल के तौर पर, डार्कनेस मीन्स ऐसे ड्राउनी फिगर के तौर पर भी दिखाया गया है कि मीन्स वो पावर, जो पावरफुल की बात की जाए तो पावर्स या पावर या एविल के लिए या रूलर्स के तौर पर जो बात की जाए तो उसे टाइगर को प्रेजेंट किया, और इनोसेंट फिगर के तौर पर उसने डीर को प्रेजेंट किया है। इनोसेंट डीर जो है वो अपने ही मीन्स अपने ही धुन में मगन है, उसे किसी चीज़ का आइडिया नहीं, वो मासूमियत से वो बेचारा पानी पी रहा है पूल से, जंगल में पूल से पानी पी रहा है। वो इस चीज़ से नावाकिफ़ है, अवेयर है कि टाइगर मीन्स उन्हें उसे अटैक करने का प्लान किया हुआ है। वो स्लोली अपने साउंडलेस पास से, बग़ैर किसी साउंड के, सॉफ्ट साउंडलेस पास के बग़ैर किसी साउंड के मीन्स अपने सॉफ्ट पंचों से बग़ैर आवाज़ किए हुए वो आ रहा है। और वो अचानक से वो जब उधर मीन्स हिरन के पास पहुंचता है, अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है, उसको हिरन को टुकड़ों में मीन्स हिरन के टुकड़े कर देता है, उसको चीर कर उसके बेचारे के टुकड़े कर देता है। किस तरह से वो कहता है कि एक खौफनाक तरीके से, किस तरह से बेरहम और बेदर्दी से
उसे मार देता है, जो बेचारा इस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं है, उसे किसी चीज़ का आइडिया नहीं है कि उसके साथ नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। वो पोएम में जो हिरन है, जो कि मतलब इनोसेंट फिगर के तौर पर, एक सॉफ्ट फिगर के तौर पर, मीन्स एक लव के सिंबल के तौर पर दिखाया गया है, उसको ऐसे अचानक से मीन्स मार दिया है, बिल्कुल बेरहमी से। उसके डिस्ट्रक्शन, उसकी डेथ दिखाई गई है कि किस तरह से उसे मारा गया है। वो बेचारा नावाकिफ़ होते, जिसका कोई कसूर भी नहीं है। और फिर वो मीन्स पोएम को जो एक मीन्स टाइगर की फिगर प्रेजेंट कर रहा है और हिरन की जो फिगर प्रेजेंट कर रहा है, इनके दरमियान एक कंपैरिजन बता रहा है कि किस तरह वो इनोसेंट है और वो किस तरह एक माइटी फिगर है जो बगैर किसी कसूर के हिरन के ऊपर अटैक कर रहा है। उनका एक कंपैरिजन दिखा रहा है, जिस कंपैरिजन को पोएट मीन्स डार्क डेथ और लाइफ का कंपैरिजन भी कह रहे हैं, जिसे इनोसेंट और एक्सपीरियंस का भी कंपैरिजन कह रहे हैं। डिफरेंट कंपैरिजन्स में उसे लिया जा रहा है। तो लास्ट में जो चीज़ वो कंक्लूड करता है, या लास्ट में जिस चीज़ से वो पोइट मीन्स जोड़ता है, एक नोट जो बता रहा है उसका मीन्स, वो पोइट अपना एक नोट बता रहा है, वो ये है कि वो कहता है कि आज ऐसे तो मतलब एक मासूम हिरन की लाइफ चली गई है, उसकी लाइफ सफरिंग वाली थी, मीन्स बगैर किसी इसके कसूर के बेचारा सफ़र कर गया, मीन्स बगैर किसी कसूर के मर गया। लेकिन वो कहता है ये सारा कुछ मीन्स ये नहीं कि एटर्नल है, बस सारा कुछ ऐसे ही चलता रहना है कि वो माइटी फिगर हमेशा के लिए पावरफुल रहेगी और हिरन बेचारे ऐसे ही मरते चले जाएंगे। वो उन्हें एक मीन्स एक यहाँ पे एक वो एग्जांपल देता है कि वाइट मैमोथ की, मीन्स वाइट एलिफेंट्स की, बहुत मीन्स बहुत बड़े एलिफेंट्स की जो अब इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल है भी नहीं, कि किस तरह से वो भी एशिया के पहाड़ों में मीन्स किस तरह से वो रहते थे, किस तरह से सारा कुछ रूल करते थे, किस तरह उनकी पावर थी एक। लेकिन अब वो इस दुनिया में है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उनका नाम और निशान ही ख़त्म हो चुका है। इस तरह कहता है कि टाइगर का भी ज़रूरी नहीं कि वो उसने सारा ऐसे ही रहना है, वो भी जिस तरह इनोसेंट जानवरों को, मासूम जानवरों को मार रहा है, उसका अंजाम भी उनमें मौत जैसा होना है, उसके लिए भी वही टाइम आने वाला है। फिर जब ऐसा ही होगा, टाइगर ख़त्म हो जाएगा, तो मासूम डीर, मासूम हिरन पूल से खुशी से बग़ैर किसी खौफ के पानी भी पिएंगे और बिल्कुल खुशी से अपनी ज़िंदगी भी गुजारेंगे, खुशी से मासूमियत से रहेंगे। एक अच्छा फिगर एंड पर मीन्स वो प्रेजेंट करता है, ऐसा होगा। इसी जो एंड में वो चीज़ को वो प्रेजेंट कर रहा है, एक दे रहा है ना, वो कंक्लूड कर रहा है, इसी चीज़ को वो जोड़ रहे हैं फ्रीडम से, कि किस तरह से मीन्स आज जो ब्रिटिश हैं वो इंडियन पीपल को रूल कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि उन्हें भी यहाँ से चले जाना है और वहाँ फिर इंडियंस के पास सारी पावर्स रहनी है। उन्होंने भी वाइट मौत की तरह मीन्स वाइट एनिमल्स की तरह उनका भी मीन्स ख़त्म हो जाने, जहाँ से चले जाने हैं। टाइगर के लिए मतलब है वो ये एग्जांपल दे रहा है, तो डिफरेंट कंपैरिजंस बताए जा रहे हैं। जो ये सिंपल वर्ड्स में यही एक्सप्लेनेशन थी पोएम की। आई होप आई डिड इट well, hope you guys got my word. So and in the end I always say, for memorizing or analyzing a poem we must have a complete command over the text, then we will move towards the explanation, and explanation is very simple, as I have told you and I have explained you that the poem is short and very simple and easy. In easy words I have explained all the explanation of the poem. The poem is a comparison. The poem is about deer and the tiger. The tiger is presented as a mighty figure, deer is presented as an innocent figure. Tiger attacks the deer with his as first of all he presents the mighty figure, a physical figure of the tiger, and he says that how he is coming with his soundless paws towards the among the forest towards the deer, who is deer that is drinking water from the pool in the forest, and is completely unaware of the tiger that he is coming towards him for attack. Then the tiger comes too close to him, attacks him and tore him into pieces. And he meets the deer meets the death without any fault.
but he says that once the time will come that all the fear will all the fear of the deer will despair. The tigers will despair like they from the world, like the moth, like white elephants. They will despair from the world, and now the tiger is ruling. But once the deer will get their reward, innocent deer will get their reward, as the tigers, all the tigers will fade away, all the tigers will despair from the world, and the deer will drink water from the pool without any fear, and will live a fearless life. So that's the complete explanation of the poem. Thank you. Allah Hafiz. Goodbye.